DG Terry, Madam Vibha Dr. Vibha, she's also a signatory and equal partner in the center. All of them, I warmly welcome to the function. We have many dignitaries who have not been able to come physically here, but nevertheless, they will be actively participating in this center. The other major ports, 3 ports are here. There are 9 other major ports. All chairmen will be actively participating and also benefiting out of the center. So them and other our PSUs like Shipping Corporation, we are also thinking of retrofitting one of the ships as from green hydrogen. So they will also be benefiting from this. I also welcome them. Most probably they have joined through video link to this function. This event is being live telecast also, and there is a facility to join it through video link. So I also welcome them. I also welcome all the experts from the TERI. I do not personally know any one of them, but I warmly welcome them because they'll be the brain behind this functioning of this center. So I welcome them to this function. I also welcome the invitees from other ministries. We had invited Ministry of Petroleum, Ministry of Renewable Energy, Ministry of Environment and Forest. If they are participating through video link, I welcome them to this function. So I also take this opportunity to welcome all my colleagues who have worked very hard to see this day from the ministry. I also welcome very, very important, sir, it was also decided that this center will have an active participation from one of the Nordic countries. Presently, we have from Denmark, we have a maritime expert who has joined in the embassy, and she will be regularly coordinating with this center. And also there will be further collaboration coming from some other countries. We are also trying for some other countries, sir. They will also be joining. With these words, sir, I again welcome all and everyone who is present here, all dignitaries who are present here, either here or through VC link to this function. Thank you very much. We now have a short video. I request for the same to be played. India is the 6th largest maritime country in the world. Ports in India handle almost 95% of trade by volume. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways, India intends to increase the share of renewable energy to 60% of the total power demand of each of its major ports from a present share of less than 10%. This will be achieved through solar and wind-generated power. India has unfolded a number of initiatives aimed at positioning the country as one among the leading nations in the field of sustainable green maritime solutions. The Maritime Vision Document 2030, released by Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, is a 10-year blueprint on India's vision of a sustainable maritime sector and vibrant blue economy. मैं आज इस तिरंगे की साक्षी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति उसको आत्मनिर्भर बनाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेरणा भी बनेगा। As part of India's effort to collaborate with other leading nations in this field, a letter of intent for setting up of a Center of Excellence for Green Shipping in India was executed during the visit of the Honorable Prime Minister to Denmark. मुझे खुशी है कि विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी, स्वास्थ्य, पोर्ट्स, शिपिंग, सर्कुलर इकोनॉमी
तथा वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। In line with this, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways plans to establish a National Center of Excellence in Green Port and Shipping, along with Deen Dayal Port Authority, Kandla, Paradip Port Authority, Paradip, V.O. Chidambaranar Port Authority, Tuticorin, Cochin Shipyard Limited, Kochi, and the Energy and Resources Institute, Delhi. The main object of the Center of Excellence is to provide support to Ministry in developing and maintaining a policy and regulatory framework for a green alternative technologies roadmap for the shipping sector in India. हर इनिशिएटिव को विशेष रूप से हमारी नई पीढ़ियों को जानकारी देना होगा ताकि उनको भी समझ में आ जाए कौन सा दिशा पर कैसे क्या क्या कदम उठाया जा रहा है, क्या है ग्रीन शिपिंग, क्या है नेशनल हाइड्रोजन मिशन, क्या है ग्रीन पोर्ट। इन चीजों को नई पीढ़ी समझे और हर स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो, डिस्कशन का विषय बने। For its transition to carbon neutrality and CE principles, the National Center of Excellence in Green Port and Shipping will be housed at the Tehri campus in Gurugram, Delhi. May I now request Shri Sudhanshu Pant, Secretary MOPSW, to give the keynote address. आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटनकर्ता माननीय श्री हरबोनंद होनोवाल जी, मंत्री पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय और आयुष, आज यहाँ पर मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर संजीव रंजन जी, पूर्व सचिव एवं वर्तमान अध्यक्ष नेशनल शिपिंग बोर्ड, आदरणीय डॉक्टर विभा धवन जी, डीजी टेरी, मेरे साथी अधिकारी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव आदरणीय राजेश सिन्हा जी, मंत्रालय के ही मेरे अन्य साथी अधिकारी आदरणीय टी.के. रामचंद्रन जी, आदरणीय एस.के. मेहता जी, आदरणीय श्री पी.एल. हरनाथ जी, आदरणीय मधु नायर जी, यहाँ उपस्थित टेरी के समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे मंत्रालय से पधारे समस्त साथी अधिकारीगण, उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आज अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि नव संवत्सरी 2080 नववर्ष के पावन अवसर पर माननीय मंत्री जी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आज उद्घाटन, विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं। यद्यपि इसकी स्थापना तो कुछ समय पूर्व हो गई थी, 1 से 2 माह पूर्व, लेकिन आज जो उसका यहाँ पर सेटअप है उसका उद्घाटन आपके कर कमलों द्वारा किया जाएगा। अभी बड़ी रोचक तरीके से एक लघु फिल्म में बताया गया कि इस सेंटर का क्या उद्देश्य है, तो बहुत ही संक्षेप में मैं बताऊंगा कि मंत्री जी को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सम्मिलित होने शीघ्र जाना है कि कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन फुटप्रिंट कम करना, ग्रीन सेक्टर, ये सब चीज़ें अब नेशनल लाइमलाइट में हैं। इस साल के बजट में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन इज गोल्ड, ग्रीन वेल्थ आदि कई बार ग्रीन इकोनॉमी,
ग्रीन, कुल मिला के जो ग्रीन का महत्व है उसकी प्रति पूरी दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया। और हमारा जो सेक्टर है, पतन, पोत, जलमार्ग, ये भी बहुत तेजी से ग्रीन की तरफ अग्रसर हो रहा है। फिल्म में भी जैसा बताया, 2030 में 60% तक जो ऊर्जा की खपत होगी हमारे पतनों में, वो रिन्यूएबल एनर्जी से होगी। और इसी प्रकार जो टेरी के साथ ये अनुबंध हुआ है और हमारी 4 संस्थाएं आगे आई, चारों ही अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी हैं। और हमारे वीओसी पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट और पारादीप पोर्ट, कोई भी ग्रीन इनिशिएटिव होता है ये उसमें अग्रसर रहते हैं। चाहे वो इस साल, जैसा आपको ज्ञात है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की घोषणा हुई, उसमें भी अभी से आपकी संस्थाओं ने तैयारी प्रारंभ कर दी है कि किस प्रकार से जब भारत से बहुत बड़ी मात्रा में ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यात होगा तो क्या वहाँ सुविधाएं उपलब्ध करानी हैं, भंडारण की, फ्यूलिंग की, और यदि हो सके तो वहीं पर इलेक्ट्रोलाइजर के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण भी, उसके उत्पत्ति भी संभव हो सकेगी। इसी तरह हमारे कोचिन शिपयार्ड के सीएमडी साहब हैं, नायर साहब, समय से आगे पहले रहते हुए आपने अभी से ग्रीन हाइड्रोजन सेल बेस्ड वेसल पे काम प्रारंभ कर दिया है और अगले 6 महीने के अंदर ही देश में पहला हाइड्रोजन सेल बेस्ड वेसल फेरी जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। तो समय से पहले ही हमारी संस्थाएं इस कार्य में लगी हुई हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड देश का ही नहीं, दुनिया की अग्रणी संस्था है, जो कि शिप बिल्डिंग में तो है ही, लेकिन ग्रीन इनिशिएटिव्स में भी बहुत तेजी से काम कर रही है। कोचिन मेट्रो को आपने बैटरी ऑपरेटेड वेसल्स सप्लाई किए हैं। नॉर्वे जैसे देश को, जो कि दुनिया में पहचान रखता है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, ग्रीन के सेक्टर में, उनको आपने वहाँ की एक संस्था को 2 ऑटोमेटिक अनमैन्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वेसल्स दिए हैं। तो ये संस्था ऐसी है। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही नॉर्वे से ही इनको एक और ऑर्डर मिला है, एक क्या है, सोलर पावर्ड है, हाइड्रोजन फ्यूल का एक जहाज जो करीब 500 करोड़ रुपए की कीमत का जहाज है। तो हमारे देश में ऐसी संस्थाएं हैं जो पूरी दुनिया में एक अपनी पहचान बनाए हुए हैं ग्रीन सेक्टर में। तो हमें गर्व है अपनी ऐसी संस्थाओं पे, अपने कोचिन शिपयार्ड पे, अपने ऐसे पतनों में जो समय से पहले अग्रिम तैयारी करके और ग्रीन के क्षेत्र में कार्रवाई करते हैं। टेरी के साथ जो ये पार्टनरशिप प्रारंभ हुई है, इससे देश को, दुनिया को और हमारे मंत्रालय को भी बहुत सी आशाएं हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए नेट जीरो कमिटमेंट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत के तहत जो एक लक्ष्य रखा हुआ है, उसको कैसे हम लोग अर्जित करें। भारत देश को जब हम आईएमओ में, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में जब हम ले जाते हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार से हमारी जो आईएमओ की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको देश के जहाज़ों के लिए और देश के मैरीटाइम सेक्टर के लिए हम लागू करें। किस प्रकार से ये सेंटर पॉलिसी, रिसर्च और टेक्नोलॉजी, नई जो हमारी समस्याएं ग्रीन में आएंगी, उस क्षेत्र में किस प्रकार से काम करेगा सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, और आईएमओ में भारत देश की पहचान हो सके, एक अग्रणी देश जो कि ग्रीन सेक्टर में काम कर रहा है,
उसके लिए क्या इनपुट्स देने हैं, हमारे लिए एक रिसोर्स सेंटर के रूप में भी काम करेगा, जिससे जो ग्रीन वॉयस 2050 की कल्पना आईएमओ में की गई है उसको हम आगे ले जा सकें और भारत में उस स्वप्न को साकार कर सकें। ये सेंटर एक सिंगल पॉइंट कांटेक्ट होगा हमारे मंत्रालय के लिए। ग्रीन पोर्ट हो, ग्रीन शिपिंग हो, ग्रीन वेसल्स हो, कोई भी ग्रीन से रिलेटेड चीज हो इस सेक्टर में, उसके ट्रेनिंग, रिसर्च आदि क्षेत्र में इस सेंटर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और जैसा मैंने बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में हो, चाहे बहुत बड़े आकार के ऑफशोर विंड एनर्जी जनरेटर्स हों, अभी तक 2-2.5 मेगावाट के जनरेटर लगते हैं। अब देश में 15 मेगावाट का एक टरबाइन लगने की स्थिति में आएंगे। उसको कैसे सागर में स्थापित किया जाएगा, उसके लिए भी हमारे पतन जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से शिप्स की ग्रीनिंग किस प्रकार से हो, कोचिन शिपयार्ड या दूसरे शिपयार्ड हैं उनको किस प्रकार से मार्गदर्शन दिया जाए कि ग्रीन फ्यूल पे चलाना है, हाइब्रिड पे चलाना है, किस तरह से उसको किया जाए। लो एनर्जी पतन हमारे लो एनर्जी सेंटर्स बने, वहाँ पर ऊर्जा की खपत कम हो। विंड रिसोर्स का डेटा किस प्रकार से एकत्रित किया जाए, कहाँ पर हमारे विंड एनर्जी जनरेशन संभव हो सकता है, बायोफ्यूल्स को किस प्रकार से जहाज़ों में उपयोग कर सकें, ग्रीन टग्स वगैरह को कैसे करें, जस्ट इन टाइम अराइवल अगर जहाज़ों का है हमें एनर्जी ऑप्टिमाइज करने के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, कि जहाज़ जस्ट इन टाइम आएँ और चले जाएं। तो ये सब कई तरह की चीज़ें हैं जो आशा करते हैं कि सेंटर में हो सकेंगी। और निश्चित रूप से मंत्रालय के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं विशेष करके डॉक्टर संजीव रंजन जो पूर्व सचिव हैं, उन्होंने इस कार्य में बहुत रुचि ली और उस कारण ये सेंटर एक इसका स्वरूप साकार हो पाया। माननीय मंत्री जी ने आज अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से इस सेंटर के उद्घाटन के लिए समय निकाला। उनका मेरी तरफ से विशेष आभार। और मैडम डीजी जो हैं उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि इस सेंटर में बहुत अच्छा और ओरिजिनल काम हो, जिससे कि इसकी पहचान न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में कायम हो सके और एक ऐसा सेंटर ये बने कि पूरे दुनिया में भी अगर किसी को कोई सोल्यूशन चाहिए ग्रीन सेक्टर में तो इस केंद्र को वो रिफर करे। इसी के साथ आज पुनः इस शुभ अवसर पर आप सभी को बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. May I now request Shri Horbananda Honwal, Honorable Minister, MOPSW, to virtually inaugurate the National Center of Excellence. I request the Honorable Minister to give his address for the event. Sir.
नमस्कार। आज की सभा में उपस्थित हमारे भारत सरकार के पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय की सचिव श्री सुधांश पान जी और पूर्व सचिव डॉक्टर संजीव रंजन जी और टेरी की डायरेक्टर जनरल मैडम डॉक्टर विभा धवान जी और हमारे मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा जी, दीनदयाल पोर्ट के अध्यक्ष एस.के. मेहता जी, टुटीकोरिन पोर्ट के अध्यक्ष टी.के. रामचंद्रन जी और कलकत्ता पोर्ट और पारादीप के अध्यक्ष पी.आई. हरनाथ जी और हमारी कोशीन शिपयार्ड लिमिटेड की सीएमडी मधु एस नायर जी और यहाँ उपस्थित सभी टेरी की और हमारे अलग अलग मंत्रालय की अधिकारीगण, सबसे पहले मैं आज इस अवसर पर आप सबको शुभकामना देता हूं। हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि आज हम लोगों ने मिलकर हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन से उनकी दिए हुई शक्ति की द्वारा हम लोगों ने आज नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट ग्रीन शिपिंग का उद्घाटन की है। और मुझे लगता है कि इस इंस्टीट्यूट के जरिए भविष्य में अपने परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो विजन है, इस विजन को साकार करने के सिलसिले में, क्लाइमेट एक्शन के सिलसिले में हम महत्वपूर्ण भूमिका ले पाएंगे। क्योंकि आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश में पहली बार के लिए ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। लक्ष्य है कि हमारे क्लाइमेट चेंज ना हो और हम अपने सही कदम हम क्लाइमेट एक्शन के सिलसिले में उठाए ताकि हमारी ब्लू इकोनॉमी जनरेट करने के सिलसिले में हम अपने बहुमूल्य योगदान दे पाए। As you all know, India is the 16th largest maritime country in the world with a coastline of about 7,517 kilometers. The shipping industry in India plays a vital role in sustaining growth in the country's trade and commerce. India has 12 major ports and more than 200 non-major ports. Ministry of Ports, Shipping and Waterways, India intends to increase the share of renewable energy to 60% of the total power demand of each of its major ports from a present share of less than 10%. The ports have also aimed to reduce carbon emission per ton of cargo handled by 30% by 2030. The Maritime India Vision 2030, a 10 years blueprint on India's vision of a sustainable maritime sector and vibrant blue economy, has already been released. The National Center of Excellence for Green Port and Shipping is a direct outcome of the thought process in the LOI between India and Denmark for setting up a Center of Excellence, signed during the visit of Honorable Prime Ministers of India, Sri Narendra Modi ji, to Denmark in May 2022. Discussions with Denmark side are in progress regarding association with the National
Center of Excellence for Green Port, Green Shipping as per the LOI. The Ministry of Port, Shipping and Waterways signed MOA with the Energy and Resources Institute on 18 November 2022 for setting up of the National Center of Excellence in Green Port and Shipping on policy and regulatory support. This center is aimed at developing regulatory framework and alternate technology adoption, roadmap for green shipping to foster carbon neutrality and circular economy in shipping sector in India. The center will be housed at and led by Terry as a knowledge and implementation partner. The work undertaken by this center will provide decision makers at a national and sub-national level with methodology and framework to implement carbon neutrality measures to meet obligation under the Paris Accord through renewable energy, carbon capture and storage, and other emerging alternate technologies, including green fuel. The specific objective of this center is to empower Make in India in port, coastal and inland water transport, and to enable fast-track innovation in order to provide most appropriate, technologically advanced, and sustainable solution in this sector. The ultimate outcome envisages through setting up of this center are to make all port greener by uses of renewable energy, reduction of carbon emission in cargo handling, and green energy supply hub for ship visiting the port, to establish India as a hydrogen hub for export of green hydrogen, green ammonia, and its derivatives, to establish India as a green ship design and shipbuilding center for the global client. I believe these are the very, very important initiative taken so far. मेरा यही आग्रह है, ये सेंटर दुनिया के लिए, सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया के लिए एक मॉडल बने, आइडियल बने, ताकि दुनिया की मानव समाज के लिए ये सेंटर पर्यावरण के सिलसिले में बड़े उल्लेखनीय भूमिका पालन करे, क्योंकि ये शक्ति देश के अंदर है और इस शक्ति को अभी दिखाना होगा अपने कर्मों के जरिए, अपने अपने अलग अलग कदम के जरिए हमको ये साबित करना होगा वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि आज उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो विजन दी है, स्पष्ट बोले है कि जो भी काम करेंगे वो सस्टेनेबल होंगे देश और दुनिया के लिए, ये मानव समाज को राहत देने का काम करेगा। ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? हमारा पर्यावरण सही रहे, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट सही प्रोटेक्टेड रहे, वेल गार्डेड रहे, सागर हो, नदी हो, हर वाटर बॉडी हमारा साफ सुथरा रहे, ताकि किसी प्राणियों के लिए कोई खतरा ना बने। प्रकृति, प्राणी, पानी और प्राण, इन चीजों को समझना होगा। प्रकृति, प्राणी, पानी और प्राण, क्योंकि प्रकृति बने है प्राणियों के लिए, प्रकृति का बिना प्राणी नहीं जी सकते। इन सही बातों को समझना होगा, सही उपलब्धि करना होगा। मुझे लगता है कि आज 21वीं सदी में मानव समाज ने इन बातों को स्वीकार की है। हर प्रांत में जो भी चुनौती प्रकृतियों की द्वारा अब दी गई है, इस चुनौती का अगर सामना करना है तो हमें सही रास्ता चुनना होगा, सही हमें कदम उठाना होगा। मुझे लगता है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसी दिशा सिर्फ देशवासियों के लिए नहीं, दुनिया के मानव समाज को दी रखी है। आप देखिए योग के जरिए कैसे एक व्यक्ति निरोगी बन सकता है। पहले योग के बारे में दुनिया के मानव समाज गंभीर रूप से चिंता कभी भी नहीं किया था,
माध्यम प्रधानमंत्री जी ने 8th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा करके ये साबित किया है, हाँ, मानव समाज के लिए ये जो विज्ञान, इट्स ए साइंस ऑफ बॉडी, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ लाइफ। इन विज्ञान को मानव समाज समझे और स्वीकार करे। इसलिए युग अभ्यास में जुड़ जाइए। युग के जरिए, युग फॉर ह्यूमैनिटी, that is how Honorable Prime Minister has integrated the global society together on the same platform, on the platform of International Day of Yoga, that is on 21st of June. So this is how in every sector which concerning the human society, now Honorable Prime Minister is taking some of the very, very sustainable kind of initiative which is helping the human society to find out the way out for lasting solution, for our comfortability. And we believe this is how we'll have to proceed. Anyway, I want to make an announcement. Our ministry plans to launch Green Truck Transition Program in our ports, starting with green hybrid trucks. नायर जी है, आपका ही प्रमुख दायित्व है इस सिलसिले में. They are expected to be working in our major port by late 2025, targeting 50% green truck by 2030. In the historical year, India's presidency of G20, I am pleased to inaugurate the National Center of Excellence in Green Ports and Shipping as our ministry's endeavor towards a cleaner and greener environment and to prevent climate change, which is the prime agenda of G20. G20 में जो थीम हमें मिली है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, अगर ये सही है तो हम सबको एक साथ जोड़ के ही, मिल के ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही मेहनत, सही कदम उठाना होगा, जो कदम अब उठाया गया है नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट, ग्रीन शिपिंग to achieve the target of blue economy. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, sir. We now want to present a small token of appreciation to our dignitaries. I request the mementos to be presented by Dr. Viva Dhawan, DG Terry. First, to the Honorable Minister, Sarbananda Sonowal. Shri Sudhanshu Pant, Secretary. Shri Rajesh Kumar Sinha, Additional Secretary, MOPSW. Shri Sanjeev Ranjan, Chairman of the National Shipping Board. We also have mementos that we wish to present. To our dignitaries from the port authorities, Shri Madhur S. Nair, Chairman and Managing Director, Cochin Shipyard Limited. Shri S.K. Mehta, Chairman, Deen Dayal Port Authority. Shri P.L. Haranand, Chairman, Paradip Port Authority.
Shri T.K. Ramachandran, Chairman, Chidambaranar Port Authority. As we have come to the end of the event, I request Dr. Vibha Dhawan, Director General TERI, to give the vote of thanks. Very good afternoon. My deepest gratitude to our Honorable Minister of Port, Shipping and Waterways, as well as Ayush, Shri Sonawalji, for your gracious presence and inaugurating the National Center of Excellence in Green Ports and Shipping, Maritime Transport, is a critical infrastructure for the social and economic development of India. And as you rightly mentioned, that the Honorable Prime Minister and all of you, I'll say the entire cabinet, is putting tireless efforts in ensuring that India develops, and that development has to be sustainable and green. And there is potential. You very rightly mentioned that India has to be the best. We are the best. It is that in many years, I should say, we have done perhaps a mistake that we started aping what is happening in the West. But if we look at our own DNAs, I think sustainability is not something new. We all practice it all the time. And there is in our society otherwise that we always thought of one family. And COVID has also taught us that we have no other planet to live, and we all have to survive. Planet will do very well without us, but we can't do without the environment, and therefore we have to take care. It's a very auspicious day. I didn't realize, and I think it happened by chance, that it's first Navratra. And whenever we start something new, we wait for Navratras to start. And it so happened, last week I visited Mr. Pant's office, and I reminded him that, sir, we still have to inaugurate the center while we have started working a bit. And immediately he contacted your office and we gave the date of today, which also happens to be Navratra, beginning of Navratras this year. I'm very excited about this project, and many of you might be knowing what TERI is. We are a 50-year-old organization, and I'll say when we were established, that time no one was talking about renewable energy. And we were the first, or rather one of the first few institutions which started working on renewable energy. We are not-for-profit organization, and that shows our character that whatever research we do, we want to ensure that it reaches the person or to the industry for whom that research is meant for. Now, this particular relationship is very unique because what we are looking at, like in TERI is a center, we have expertise in different areas. Climate change, we are working a lot. We have contributed to IPCC studies, and also our former Director General, Dr. Pachauri, he won the Nobel for bringing, I should say, climate change at a podium that it attracted world's attention. And similarly, we also have centers on renewable energy or within the programs. So there's a very strong program of energy in which we are working right from energy transition, renewable energies, energy efficiency, and so on. We have another program which is on sustainable habitats, where we are looking into buildings, the efficient building designs, efficient building material. And when we talk of habitats, you can't neglect transport. And therefore, what are the best means of transportation? And various sectors, like how do you even make your postal and railways green? So one has to look into all these parts if you want to ensure that India's growth is sustainable.
I need not emphasize much on climate change because if I was talking a decade earlier, I would have said that's a threat. But today I'll say whatever happens, we say it's because of the changing climate, which is true. And when we talk of 1.5 degrees, it is that we are already 1.15 degrees. That kind of temperature has already happened. So what's going to happen if we are not able to control it? It is not simply the extremes of temperatures or rains. It is actually going to impact productivity of each one of us as well. So world will not be the same if we let it happen, and therefore it's a necessity that we take action on various parameters. Rightly mentioned, because when we talk about the coastline that India is blessed with, it's a long coastline. It is also, it's the major way of transportation of cargo. And it also holds true that water or seas is one thing in which ships are going to be there for a long time. And therefore, you'd require regulations. It can't be that depending on which country the ship is coming, there are no regulations and they can spend any time in your waters and pollute it. So therefore, what we are talking about is intersectoral kind of studies. We really want to build on the expertise which are with the 4 ports. And I'll say not just the 4 ports, I'll say it should emerge as a center. It is multi-partner and maybe multi-finance, because we are also looking at technical support from Denmark, Norway, and maybe few other countries, because rather than reinventing the wheel, we should get the technology wherever it is available and fine-tune it to our requirements. And that is, and somewhere, I also say it should be co-development of technology. I have a lot of belief that if we look at India, we talk of young workforce, and that workforce, fortunately, is also very hardworking, very innovative. If we look at the startup environment in our country, we are next to none. So therefore, with innovative minds, and I'll say not just for India, Indians have contributed to the growth of science everywhere in the world. You look at CEOs of the top companies, they all are Indians. And therefore, it is time for India also to show that we can do things within the country which the world will have to follow. And that is what this center should emerge as. So we are depending on the expertise which is available with the ports and with other institutions in the country, and also overseas, and develop the technologies which should be adopted world over, and also the regulations which should favor the developing world and as well as the developed part of the world, that they should be something that they can be adopted without much difficulty. I'd like to express my sincere thanks to Shri Pant Ji, Secretary, Ministry of Port, Shipping and Waterways, for your address and your continuous guidance, encouragement for setting up the center. I'd like to take this opportunity to thank Dr. Rajiv Ranjan, ex-secretary, and I'll say under his guidance, this baby was born. So he really guided us a lot, what to do, how to do. So thank you very much, sir, for giving all the support. I'm thankful to Shri Rajesh Kumar Sinha, Additional Secretary, without whose constant direction and support, the organization, not just launch of this particular event, but I'll say all the time we contact him for whatever we want to do. My heartfelt gratitude to Shri Madhu Nair, Chairman and Managing Director of Cochin Shipyard, Shri Mehta, Deendayal Port Authority, Shri Hadanand, Paradip Port Authority, and Shri Ramachandran, Chittamranan Port Authority for
your valuable guidance and extending support in setting up of the National Center of Excellence. And we really would seek your guidance in the projects which we are now going to take up. We will have the steering committee meeting soon. It's some urgency at my end that we are unable to have it today, but we will definitely have it soon, and my colleagues are ready with the project proposals which we would like to get started immediately. My thanks to all the dignitaries who are present here, and we do look forward to your continuous support and guidance. And my sincere thanks to all my colleagues. And they all, I can tell you, they all are very excited. And I always tell them the potential of this program is to grow bigger than TERI. So this one program alone can take us to, I should say, very different heights and also contribute to the society. So thank you very much once again. So we'll now move towards the inauguration site, if time permits, to the Honorable Minister.